गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है कॉल फॉर इंडियनाइजिंग ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये टॉपिक आपके पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उन्होंने भी कहा है कि उन्होंने एक तरह से रिफ्लेक्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशनल लेगेसी को, जिसमें कि उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को सेंट्रल रखा है और कहा है कि इंडियनाइजेशन हो रही है लीगल सिस्टम की। तो अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन देखें तो ये लैंडमार्क केशवनंदा भारती केस में जो है इस्टेब्लिश हुआ था लीगल प्रिंसिपल, जो कि कहता है कि फंडामेंटल फीचर्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो अमेंड नहीं कर सकती पार्लियामेंट। तो सीजेआई ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को कंसाइंस बताया, जो कि हमारी डेमोक्रेसी को एब्सोल्यूटिज्म में कन्वर्ट होने से रोकता है। डॉक्ट्रिन ने कहा जो ये डॉक्ट्रिन है ये सिर्फ कोई प्रेसिडेंट नहीं है बल्कि फाउंडेशनल अफर्मेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और रूल ऑफ लॉ की। तो सीजीआई ने कहा है कि डॉक्ट्रिन जो है वो कोई जुडिशियल फैंसी नहीं है बल्कि एक अनकवरिंग ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही एम्बेडेड हैं। तो ये प्रिंसिपल्स जो है बेसिकली लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ह्यूमन डिग्निटी जो है इसके मॉरल कोर को इनहेरिट कर रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन की स्ट्रेंथ जो है वो उसकी रिजिडिटी में नहीं बल्कि उसकी अडेप्टेबिलिटी में जो है वो लाई करती है विदाउट लूजिंग इट्स मॉरल कंपस। तो ये जो डॉक्ट्रिन है ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस से फ्लो हो रही है और प्रोटेक्शन करती है कोर फीचर्स की, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर्स, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू। और कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ही दिखा रहा है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो एक एज अ नेचुरल राइट एग्जिस्ट करता है, जो कि जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी एम्बेड कर रहा है। तो ये जजमेंट ने प्रूव किया जो है केशवनंदा भारती जजमेंट ने कि एक यंग रिपब्लिक भी अपनी मॉरल कंसाइंस जो है वो कंपेरेबल टू ओल्डर डेमोक्रेसीज रख सकता है या असर्ट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि डिस्पाइट यूके और यूएस के इन्फ्लुएंसेस, इंडियन इंटरप्रिटेशन भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की हुई है और उसमें एक स्वदेशी कलर है। गवर्नमेंट भी जो है इस जो है यूनिक इंडियन जुरिस्प्रूडेंस को एंडोर्स करती है। जस्टिस पीएन भगवती ने कहा कि हमें फॉरेन लीगल ऑर्डर पर जो है वो रिलाई नहीं करना है। और जस्टिस एन वी रमन जो है उन्होंने भी कहा कि इंडियनाइजेशन जो है वो ज़रूरी है ईजी एक्सेस टू जस्टिस देने के लिए। इवन अगर हम देखें तो पीएम मोदी भी जो है वो कहते हैं कि ईज़ ऑफ जस्टिस जो है वो इवन द पुअरेस्ट के लिए भी अवेलेबल होना चाहिए। और उसके लिए जो है हम यूनियन लॉ मिनिस्टर जो है वो टाइम टू टाइम जुडिशियल कॉम्पिटेंस को बढ़ाने के लिए ई कोर्ट्स, एआई इनेबल्ड सिस्टम्स जो है वो लेकर आ रहे हैं। तो चैलेंजेस भी लेकिन हैं। चैलेंजेस क्या है कि रिकनसाइल करना पार्लियामेंट की पावर को बेसिक स्ट्रक्चर के साथ जो है अलाइन करना, उसको मेंटेन करना लेजिटिमेसी ऑफ जुडिशियल रिव्यू को विदाउट परसेप्शंस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, इंटीग्रेट करना इंडिजिनस ट्रेडिशंस को और मॉडर्न डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को भी अपहोल्ड करना, टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिफॉर्म जो है वो रूरल और मार्जिनलाइज्ड लोगों तक पहुंच सकें ये भी इंश्योर करना। तो वे फॉरवर्ड भी यही है, प्रमोट करो सिविक एजुकेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस, एक्सपैंड करो ई कोर्ट्स, डिजिटल फाइलिंग, एनकरेज करो एकेडमिक एंगेजमेंट एंशिएंट इंडियन लीगल प्रिंसिपल्स के साथ, प्रोटेक्ट करो जुडिशरी को फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और इंडियन इंटेलेक्चुअल हेरिटेज को से भी जो है वो अपनी मॉडर्निटी को ड्रॉ करो, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने 3 एमओयू साइन किए हैं नागालैंड मेडिकल काउंसिल के साथ। तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो है वो एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का। तो ये सेट करता है स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग्स इन द कंट्री। इसका बेसिक फंक्शन जो है वो रेगुलरली स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग्स को अपडेट करना है, पब्लिश करता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स फॉर इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, प्रमोट करता है रैशनल यूज ऑफ जेनरिक मेडिसिन ऑल्सो। अब फार्माकोपिया का मतलब क्या होता है? बेसिकली क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग्स का जो है ऑफिशियल कंपेंडिया होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो 5th एडिशन जो है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का रिसेंटली कंक्लूड हुआ है। तो ये इंडियन चैप्टर है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का, जिसको 2021 में एस्टैब्लिश किया गया। तो ये ग्लोबल मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है जो फॉस्टर करता है डायलॉग ऑन पब्लिक पॉलिसी इशूज़, ओके। इसका एम है मैक्सिमाइज करना अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द इंटरनेट। ये गाइडेड है बाय 14 मेंबर मल्टी स्टेक होल्डर कमेटी। ये प्ले करता है एक वाइटर रोल शेप करने में पॉलिसीज़ फॉर एन ओपन, सिक्योर एंड एक्सेसिबल इंटरनेट, ठीक है। तो इंटरनेट गवर्नेंस क्या होता है? प्रोसेस है जो कि डेवलप करता है नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स जो कि इम्पैक्ट कर सकते हैं कि कैसे इंटरनेट को यूज़ किया जाए और फंक्शन कैसे करे वो। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। ये टॉपिक आपके
गवर्नेंस और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकपाल की प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट डिफेंस सेक्रेटरी और अदर ऑफिशियल्स को जो है वो क्वैश कर दिया है। एक इरेगुलरिटीज़ का केस था नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल में। तो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल जो है वो 1958 में बनाई गई एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है डीपीआईआईटी के अंडर। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन है फ्रॉम एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट, और कुछ टेक्निकल और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस भी इसमें इन्वॉल्व है। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अवेयरनेस जो है प्रोडक्टिविटी के बारे में जनरेट करता है, ये थिंक टैंक की तरह काम करता है गवर्नमेंट के लिए। और ये अमंग द प्रीमियर प्रोडक्टिविटी कंसल्टेंसी एंड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस है। ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी रेज करता है ये अपने ऑपरेशंस को सस्टेन करने के लिए। और ये एक टोक्यो बेस्ड एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का ही कॉन्स्टिट्यूएंट है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सिम बाइंडिंग। टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने ओवर द टॉप कम्युनिकेशन ऐप्स जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सबको कहा है कि सिम बाइंडिंग इंश्योर की जाए। तो सिम बाइंडिंग क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ डिवाइस बाइंडिंग जिसमें यूज़र का मोबाइल डिवाइस जो है सिक्योरली लिंक्ड हो जाता है उसके सिम कार्ड के साथ। ये अप्रोच एनहेंस करती है सिक्योरिटी को बाय इंश्योरिंग की ऑथेंटिकेशन प्रोसेस जो है वो सिर्फ डिवाइस से ही टाइड ना हो बल्कि यूनिक आइडेंटिटी ऑफ सिम कार्ड से टाइड हो, और ताकि रिस्क ऑफ अनऑथोराइज्ड एक्सेस कम हो सके। ये प्रिवेंट करता है यूज़र को फ्रॉम हैकर्स, स्पैमर्स और फ्रॉडस्टर्स, ठीक है, ताकि वो मिसयूज़ ना कर सके नंबर्स को। तो अब जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का कहना है कि सर्विसेज तभी वर्क करेंगे आपके फ़ोन में ये जब आपका सिम कार्ड आपके फ़ोन में होगा जिससे वो लिंक्ड है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत ही अ, अलग से गाइडलाइन है। ऑलरेडी जो है बहुत सी बैंकिंग और यूपीआई ऐप्स जो हैं वो एक्टिव सिम रूल्स को इन्फोर्स करती हैं ताकि फ्रॉड को रोका जा सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एशिया पावर इंडेक्स। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली इंडिया ने सिक्योर कर ली है थर्ड रैंकिंग एशिया पावर इंडेक्स में, और यूएस और चाइना का फर्स्ट और सेकंड स्पॉट आया है। तो ये एशिया पावर इंडेक्स जो है एनुअली पब्लिश किया जाता है ऑस्ट्रेलिया बैंक बेस्ड थिंक टैंक लोई इंस्टीट्यूट द्वारा। तो ये असेस करता है एबिलिटी ऑफ नेशंस पर्टिकुलरली जो एशियन कॉन्टिनेंट में है कि वो इन्फ्लुएंस करें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कैसे वो इन्फ्लुएंस कर पाते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को। तो ये 7th एडिशन है जिसमें 8 थीमेटिक मेजर्स के थ्रू इसको रैंकिंग दी जाती है। मिलिट्री कैपेबिलिटी, डिफेंस नेटवर्क्स, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, फ्यूचर रिसोर्सेज। तो इंडिया का जो थर्ड रैंक आया है वो 2 मेजर्स पर बेसिकली आया है, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी और फ्यूचर रिसोर्सेज में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूजीसी ने सभी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अक्रॉस द कंट्री कहा है कि वो नॉमिनेट करें टीचिंग फैकल्टी को अंडर द नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग। तो एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है ये डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी का, नेशनल एजुकेशन के ही अलाइंड है ये। 2022 में लॉन्च किया गया था 30 सेंट्रल स्कूल्स में। तो एक तरह से प्लेटफॉर्म देता है ये प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स को जहाँ पर वो नॉलेज शेयर कर सकते हैं, स्किल्स और एक्सपर्टीज एज अ मेंटर विद मेंटी टीचर्स शेयर कर सकते हैं। एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट देता है ये, ठीक है। तो एन जो है उनको असाइन किया गया है कि वो डेवलप और डिज़ाइन करें मोडालिटीज़ इसके लिए। तो इसमें सेमिनार्स और वर्कशॉप्स होती हैं और पार्टिसिपेशन की जाती हैं, सर्टिफिकेट्स, क्रेडिट्स दिए जाते हैं, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं परसिवरेंस रोवर। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू हुआ है, नासा के परसिवरेंस रोवर ने रिसेंटली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्कवर की है मार्स के एटमॉस्फेयर में फॉर द फर्स्ट टाइम। तो परसिवरेंस रोवर का नाम पर्सी भी है और ये सेमी ऑटोनोमस रोवर है, नासा के ऑनगोइंग मार्स 2020 मिशन का पार्ट है। पहला रोवर है जो एक्चुअली लैंड हुआ एक एंशंट मार्स रिवर डेल्टा में। ये एंशंट लाइफ के साइंस को देखने गया है और सैंपल्स लेता है ये रॉक और रेगोलिथ के वहाँ पर। फर्स्ट रोवर है जिसने रिकॉर्ड की साउंड्स ऑन मार्स और ब्रॉडकास्ट किया अर्थ को। फर्स्ट रोवर है जिसने वहाँ पर ऑक्सीजन भी क्रिएट की, ठीक है, मॉक्सी के थ्रू, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है। इंजेनिटी हेलीकॉप्टर भी इसका पार्ट है, मतलब एक स्मॉल ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट जो टेस्ट कर रहा है फर्स्ट पावर्ड फ्लाइट्स ऑन मार्स। फर्स्ट एयरक्राफ्ट है हिस्ट्री में जिसने एक पावर्ड कंट्रोल्ड फ्लाइट जो है अनदर प्लैनेट पर जो है वो मेक की है। तो इंजेनिटी जो है वो सोलर पावर का यूज़ करके अपनी बैटरीज को चार्ज करता है और ऑपरेट करता है ऑटोनोमसली। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने 7995 करोड़ की डील कर ली है यूएस के साथ एज फॉलो अप सपोर्ट पैकेज फॉर इंडिया नेवी का, जो 24 MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर्स है 5 साल के लिए। इसको हम रोबियो भी कहते हैं, लॉकहीड मार्टिन ने इसको बनाया, यूएस की कंपनी जो है। तो इसके अगर हम फीचर्स देखें तो ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है, डिज़ाइंड है ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए। वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट सबमरीन हंटिंग हेलीकॉप्टर्स है ये।
और इसमें हेलफायर मिसाइल्स MK-54 टॉर्पीडो जो है ये लगे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं INS तारागिरी। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो INS तारागिरी जो है डिलीवर की गई है इंडियन नेवी को माजगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड द्वारा। तो फोर्थ शिप है ये नीलगिरी क्लास की, जिसको बिल्ड किया गया है माजागांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड द्वारा। एक री इनकारनेशन है अर्स्टवाइल INS तारागिरी की, जो लिएंडर क्लास फ्रिगेट है। इसको डिज़ाइन किया गया है बाय वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो। इसको कन्फिगर किया गया है बाय कंबाइंड डीजल और गैस प्रोपल्शन प्लांट्स। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट वेपन एंड सेंसर्स लगे हैं, जिसमें ब्रह्मोस, SSM, MF स्टार, MRSAM कॉम्प्लेक्स है। ओके, प्रोजेक्ट 17A क्या है? लॉन्च किया गया डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया का द्वारा, ताकि जिसमें सीरीज ऑफ स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स बनाई जा रही हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हंसा 3 ट्रेनर एयरक्राफ्ट। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। CSIR के नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी बेंगलुरु ने प्रोडक्शन वर्जन शुरू कर दिया है इंडिजिनस हंसा 3 ट्रेनर एयरक्राफ्ट का। ये फर्स्ट इंडिजिनस फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इसमें लगा हुआ है, और ये आइडियल एयरक्राफ्ट है फॉर कमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग ऑल्सो, क्योंकि इसकी लो कॉस्ट है और लो फ्यूल कंजम्पशन है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is call for Indianizing jurisprudence. This topic is important for your polity section. So at the inauguration of International Mooting Academy at OP Jindal University, Chief Justice of India along with some Supreme Court judges reflected on the constitutional legacy. He highlighted the 1973 Kesavananda Bharati judgment, which gave the basic structure doctrine, and he also highlighted the evolving idea of Indianization of the legal system. So basic structure doctrine is a legal principle which was established by Supreme Court in the Kesavananda Bharati case of 1973, which states that fundamental features of the Constitution cannot be amended by Parliament. So CGI described this basic structure doctrine as the conscience which keeps our democracy from drifting into absolutism. So it is a foundational affirmation of constitutionalism and rule of law. CGI said that this doctrine was not judicial fancy but an uncovering of principles which are already embedded within our Constitution. So judges unearth its inherent moral core, that is liberty, equality, fraternity, and human dignity. And the Constitution's strength lies not in rigidity but its ability to adapt without losing moral compass. Okay, so judicial perspectives on basic structure are also there, like Justice B. Nagarthan said that this doctrine flows from judicial independence and it resulted in the protection of core features of the Constitution. Justice P.S. Narasimha called that a basic structure is not just judicial supremacy but affirmation of constitutional supremacy. Similarly, Justice M.M. Sundaresh called this basic structure as basically a natural right which is embedded in justice, liberty, and equality. So this judgment has proved, or the Kesavananda Bharati judgment has proved, that a young republic could assert a moral conscience comparable to older democracies. So the Supreme Court noted that despite influences from UK and US, Indian interpretation has developed a distinct Swadeshi color also. The government also endorses this particular unique Indian jurisprudence. So Justice P.N. Bhagwati said that India must not rely on crutches of a foreign legal order. Similarly, Justice N.V. Raman said that Indianization is needed for easy access to justice, especially for rural litigants. Okay, even the Prime Minister has called for ease of justice, even for the poorest, and uh, he highlighted virtual hearings, translated judgments for a greater accessibility. So these are some challenges also, that how we have to reconcile Parliament's power to amend with preservation of basic structure. We have to maintain legitimacy of judicial review without perceptions of activism, integrate indigenous traditions while upholding modern democratic principles, and ensure that technology driven reforms reach rural and marginalized populations. So the way forward is also that we have to promote civic education and constitutional awareness, expand e-courts, encourage academic engagement with ancient Indian legal principles while retaining universal constitutional ethics. We have to protect judiciary from political interference. Okay, and we have to draw from Indian intellectual heritage also.
So the next topic is Indian Pharmacopoeia Commission. This topic is important for our governance section. So Indian Pharmacopoeia Commission has signed 3 MOUs with the Nagaland Medical Council, and Indian Pharmacopoeia Commission is an autonomous institution of the Ministry of Health and Family Welfare. It is created to set standards of drugs in the country. Its basic function is to update regularly the standards of drugs commonly required for the treatment of diseases prevailing in this region. It publishes official documents for improving quality of medicines. It also promotes rational use of generic medicines. What is pharmacopoeia? It is pharmacopoeias are basically official compendia of quality standards of the drugs which are being imported, manufactured, stocked, or being sold in India. So the next topic is India Internet Governance Forum. This topic is important for your governance section. So the fifth edition of India Internet Governance Forum recently concluded. It is the Indian chapter of the United Nations Indian Internet Governance Forum, which was established in 2021. So it's a global multi-stakeholder platform which fosters dialogue on public policy issues related to the internet. It aims to maximize the opportunities of the internet while addressing associated challenges and risks. So it is guided by a 14-member multi-stakeholder committee. Okay, it plays a vital role in shaping policies for an open, secure, and accessible internet. What is internet governance? It is the process of developing norms and principles which impact the way the internet is used and functions. Okay. So the next topic is National Productivity Council. This topic is important for your economy and governance section. So Delhi High Court has recently quashed the Lokpal's proceedings against Defence Secretary and other officials in a case alleging irregularities in promotions at the National Productivity Council. So National Productivity Council is an autonomous organization under DPIIT. It was established in 1958. So it's a non-profit organization with equal representation from employers and workers, organizations, and the government, apart from the technical and professional institutions and other interests. So its headquarters is in Delhi, and its objective is to create awareness of productivity in general. It also functions as a think tank of the government. It aims to be among the premier productivity consultancy and training organizations of the country in the first phase, and Southeast Asian region in the long run. It also raises financial resources to sustain its operations on its own. Okay, so it is a constituent of the Tokyo-based Asian Productivity Organization also. So the next topic is SIM binding. This topic is important for your security section. So Department of Telecommunications has recently directed OTT communication apps like WhatsApp, Telegram, etc. to ensure SIM binding. So SIM binding basically refers to a form of device binding in which a user's mobile is securely linked to their SIM card. This approach enhances security by ensuring that authentication processes are tied not just to the device but specifically to the unique identity of the SIM card, reducing the risk of unauthorized access. So, which also prevents users from hackers, spammers, and fraudsters to misuse numbers. So, DOT has directed these apps to make sure their services work only when the correct SIM card is in the phone. So, several financial applications, including banking and UPI apps, they already enforce strict active SIM rules to prevent fraud. Okay. So the next topic is Asia Power Index. This topic is important for international relations. So India has secured third ranking in Asia Power Index, while the US and China occupy the first and second spots. So Asia Power Index is published annually by the Australia-based think tank Lowy Institute. It assesses the ability of nations, particularly of the Asian continent, to influence their external environment. So it is the seventh edition which evaluates the countries and territories across Asia based on indicators across 8 thematic measures, okay, including military capability and defense networks, economic capability and relationships, diplomatic and cultural influence, and resilience and future resources. So India has been ranked third for two measures, economic capability and future resources. So the next topic is National Mission for Mentoring. This topic is important for your governance section. So UGC has called on all higher educational institutions across India to nominate teaching faculty under the National Mission for Mentoring. National Mission for Mentoring is the flagship initiative of Department of School Education and Literacy. It is in line with the National Education Policy of 2020. It was launched in 2022
It provides platforms for professionals and experts where they can share knowledge, skills, and expertise as a mentor with mentee teachers. So it aims to create a supportive environment, and NCTE has been assigned to develop and design the modalities for National Mission for Mentoring. So it does through the seminars and workshops, and it also encourages participants to do so with certificates, performance credits, and even other incentives. So the next topic is Perseverance rover. This topic is important for your science and tech section. So in a major breakthrough, NASA's Perseverance rover has recently detected electrical activity in Mars atmosphere. So Perseverance rover is also nicknamed as Percy. It's a semi-autonomous rover. It is part of NASA's ongoing Mars 2020 mission. So it is the first rover to actually land in an ancient Martian river delta. It successfully landed on the surface of Mars Jezero crater in 2021. It seeks signs of ancient life and collects samples of rock and regolith for possible return to Earth. So it is the first rover to record sounds on Mars and broadcast them back to Earth. It is the first rover to create oxygen on Mars. And what is Ingenuity helicopter? It is a small autonomous aircraft which has been designed to test the first power flight on Mars. It is the first aircraft in history to make a powered controlled flight on another planet. It uses solar power to charge its batteries, and it can operate autonomously. So the next topic is MH-60R Seahawk helicopter. This topic is important for your security section. So India has sealed a 7,995 crore deal with the US as part of follow-on support package for Indian Navy's fleet of 24 MH-60R Seahawk helicopters for 5 years. This helicopter is also called Romeo. It is manufactured by US company Lockheed Martin. It has all-weather. It is an all-weather helicopter. It is designed for anti-submarine warfare, anti-surface warfare, and it is one of the world's best submarine hunting helicopters. It also carries the powerful Mk-54 torpedo. It can carry Hellfire missiles also. Okay. So the next topic is INS Taragiri. This topic is again important for your security section. So INS Taragiri was delivered to the Indian Navy uh, at Mazagaon Dock Shipbuilding Limited, Mumbai. So this INS Taragiri is the fourth ship of Nilgiri class. It has been built by MDL. It is a reincarnation of the erstwhile INS Taragiri, a Leander class frigate. It has been designed by the Warship Design Bureau. It is configured with combined diesel or gas propulsion plants, okay, and it comprises BrahMos, SSM, MF Star, MRSAM complex, okay, and it's part of Project 17A, okay. So Project 17A was launched by Defense Forces of India to construct a series of stealth-guided missile frigates. So the next topic is Hansa 3 trainer aircraft. This topic is important for your economy section. So recently CSIR National Aerospace Laboratories Bengaluru launched a production version of the indigenous Hansa 3 trainer aircraft. So it is India's first indigenous flying trainer aircraft. It has an advanced electronic fuel injection system, and it is an ideal aircraft for commercial pilot licensing also, due to its low cost and low fuel consumption. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.